Assalamu alaikum warahmatullah. I hope everybody is doing well. Let us start a new topic of our writing skills, that is article writing. एक्चुअली आर्टिकल क्या होता है, हम न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में कभी कभार छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो हमें बहुत इंफॉर्मेटिव लगते हैं और इन आर्टिकल्स के जरिए हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, वही हमारे आर्टिकल्स होते हैं. It is actually a piece of information that we collect from the magazines or from the newspapers. Let us see what is the definition of this article writing. An article is a written work published in a print or electronic medium. ये जो आर्टिकल होता है ये एक रिटन वर्क होती है, ये लोगों को लिखनी पड़ती है और फिर इसको पब्लिश करना पड़ता है. इट मे बी फॉर द पर्पज ऑफ propagating news. इसका जो मकसद होता है, the purpose of it is to propagate news, लोगों के पास न्यूज को पहुंचाना. रिसर्चिंग रिजल्ट्स, किसी टॉपिक पर आप रिसर्च करते हैं और रिजल्ट ढूंढने के लिए आप आर्टिकल लिखते हो. एकेडमिक एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल लिख रहे हो कि ड्यूरिंग कोविड स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लास के जरिए क्या कुछ सीखा, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. This is academic analysis. Generally, it is a piece of writing that is published in a newspaper or a magazine. It is a piece of writing that is printed in a magazine or a newspaper. Pointers to remember. There are certain pointers that we must remember before writing this article. The first point is the title must be eye-catchy. मतलब कि जब रीडर की नजर इस टाइटल पर पड़े तो इसका ध्यान ये जो आर्टिकल है इस अपनी ओर खींचे. दिस इज आई कैची. जब कोई भी रीडर या लोग इस टाइटल को पढ़े उसको लगना चाहिए कि इस वाले आर्टिकल में जरूर हमारे लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी. The second one is the repetition of words should be avoided. There is no need to repeat the words. Repetition of words should be avoided. The third point is information should be presented in a logical and coherent manner. जो भी information आप इस article में लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, that must be logical, that must be coherent, that must be clear. And the fourth point is the word limit is 150 to 200 words. यहाँ पर जो word limit आपको दिया गया है that is from 150 to 200 words. ये depend करता है आपके एग्जामिनर पर भी कि वो आपसे कितने वर्ड्स चाहता है. फॉर्मेट ऑफ दिस आर्टिकल राइटिंग. The format of article writing is divided into 3 sections. The first section is that is heading. वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, that must be eye catchy, that must be attractive. The second section or point is that is byline. Byline means by or name of the person who is writing this article. For example, by Shahid. The third section is that the most important, and the third section is that is body. The body consists of 3 paragraphs. आपको यहाँ 3 paragraphs में अपना जो ये आर्टिकल है, आपको यहाँ 3 paragraphs में अपना जो ये आर्टिकल है कंप्लीट करना है. And in the first paragraph it is meant for introduction. You have to introduce your topic in this section. आपको introduction देनी है अपने टॉपिक के बारे में इस पैराग्राफ में. And introduction must be short and brief, to the point. The second paragraph is that is the main content, the main purpose of this article writing. जो भी आपका टॉपिक है उसको पूरी तरीके से यहां एनालाइज करना है इस वाले पैराग्राफ में, और जो भी डिटेल्स है उसको इसी पैराग्राफ में लिखनी है. The third paragraph is that is conclusion. You need to conclude your or end your topic in this paragraph. यहां पर आपको अपने टॉपिक को एंड करना है, अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है. आप अपने टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ सकते. आपको ये पैराग्राफ जरूर लिखना है और अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है. Then comes our marking scheme. For example, if you will get 4 marks for writing this article, it will be divided into 3 parts. The first part is that is format. Format के लिए आपको अगर
4 मार्क्स है तो 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट के हिसाब से लिखने पर आपको 1 मार्क्स हासिल हो जाएगा। और एक्सप्रेशनिस्ट के लिए भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। एक्सप्रेशनिस्ट मीन्स कि कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आपको 1 मार्क्स एक्सप्रेशनिस्ट के लिए दिया जाएगा। और कंटेंट के लिए 2 मार्क्स। जो भी आप मेन बॉडी लिखोगे, तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि मेन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। अगर वो पैराग्राफ आप लिखोगे तो आपको और 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी 4 मार्क्स हासिल करने के लिए आपको फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशंस का ख्याल रखना है। ये रही हमारी एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनका ख्याल हम रखेंगे। पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। हमारी एग्जाम्पल क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन, हमें एक आर्टिकल लिखना है द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। जो भी ऑनलाइन क्लासेस थे उनके कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे इन अराउंड 150 टू 200 वर्ड्स। अगर आपको ये टॉपिक दिया जाएगा तो आपको कैसे लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा कि सबसे पहले हम ऊपर टॉप पर एक हेडिंग लिखेंगे और वो हेडिंग आई कैची लगनी चाहिए, वो हेडिंग रीडर्स को अट्रैक्ट करे, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए। और हेडिंग यहां पर क्या है, द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद हमने फॉर्मेट में देखा था कि इसके बाद बायलाइन है, और बायलाइन मीन्स बाय किसने लिखा, बाय वसीम फॉर एग्जांपल। देन कम्स आवर बॉडी एंड आवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। और पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देंगे एंड आवर इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक दिस। द वायरस स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस हैज लेड टू मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस बाय स्कूल्स, कॉलेजेस and coachings. It is because of pandemic coronavirus. Although these classes are able to mitigate the loss of students, they have imposed some major concerns as well. इस इंट्रोडक्शन में हमने ये लिखा कि पैंडेमिक का अल्टरनेटिव सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस था, और ऑनलाइन क्लास के जरिए स्टूडेंट्स ने कुछ सीखा, मगर इसके साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। Now body will come, and in body we will discuss the advantages and disadvantages of online classes. Online classes are available to students sitting anywhere in the world. It has eliminated the time and cost required to reach the college or school and prevented the loss of studies, especially during lockdown. This is advantage of this online classes. Although students are trying to manage the studies, there are some major concerns. मगर कुछ major concerns भी थे, कुछ disadvantages भी थे। कौन से disadvantages? One of the biggest problem is internet connection, especially in rural areas. Rural areas में internet connection नहीं है, so students are not able to connect to classes. Another big problem, और दूसरी problem क्या थी, is lack of one-to-one teaching, due to which students find difficult to ask questions. Because one-to-one teaching nahi thi, students fail to answer the questions that occur in their minds. The third point is overuse of electronic devices cause various health issues. This is another disadvantage of online classes. Then comes our conclusion, and our conclusion will be like this. Both teachers and students have adopted this model of education. If we try to resolve the problems related to this model, agar wo problems hum resolve karenge, it will be a big revolution in the upcoming years. Here we concluded our article. Here you can pause the video and take a screenshot of these 3 pages so that you can analyze this article. This was all about article writing. Here what we have learnt is that what is an article, and then certain pointers that we must remember. उसके बाद हमने फॉर्मेट भी देखा, मार्किंग स्कीम भी देखी, और एग्जाम्पल के जरिए जो हमने एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस की, उसके जरिए हमने इस टॉपिक की मजीद वजाहत की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू।